स्क्रीन पे जो ये वाला जो पार्ट है, दिस SCP, ये किधर है? देखती हूँ। नहीं पता। वो प्लगइन्स में जाएंगे, प्लगइन्स में जाके वहाँ पे SCP को इनेबल करना पड़ता है। और ऑन योर स्क्रीन ये जो ऊपर है SCP है क्या यहाँ पे? अच्छा, स्क्रीन पे हाँ जी, स्क्रीन पे SCP है। हाँ, तो यहाँ पे बैंड सेट क्लिक करो तो वो खुलेगा जो आपका है ना वो प्रोसीजर। हाँ जी, एक सेकंड। When the class started, मेरे इस पे कुछ अपडेट्स हो रहे थे सिस्टम के, तो वो थोड़ा स्लो चल रहा है अभी। ओके, द बैंड। अच्छा, हमारे विंडोज के नखरे। ओके, सो आई डू बैंड सेट, राइट? हाँ, so you should get actually something like this, and then you go into pre-processing, go into Landsat, and you recall this procedure, right? Hopefully. सर कुछ आ नहीं रहा बैंड सेट क्लिक करने पे। मतलब डाटा कहाँ रखा है आपने? आई क्लिक बैंड सेट एंड अब कुछ नहीं। हाँ तो अरे बाबा, तो यू हैव टू गो टू दिस ना, ये जो जगह है ना, यहाँ पे ये क्लिक करके वो जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है वहाँ पे जाने का ना। जहाँ स्टोर था लैंडसेट C2L1। हाँ जी, एक सेकंड करती हूँ। कहीं स्टोर करके रखा होगा ना आपने? हाँ जी, एक सेकंड। प्रोसेसिंग लैंडसेट। ओके, लैंडसेट में प्री प्रोसेसिंग लैंडसेट। So today's process is important because we are going to learn how to prepare the LULC map. So that's the reason why. So this is the visual LULC. You can also do the classification LULC. Yes. Okay, this is where I had saved all these images that I had worked upon. Okay. Where? I mean, share your screen, please, because I am again now on my screen. Okay, just a second. Recording को नहीं start कर लिया है। हाँ जी। आया ये कहाँ है? नहीं ये सेव कहाँ हुआ? ये मैंने वही फोल्डर खोला है जहाँ पे ये सेव्ड है। नहीं ये तो फोल्डर थोड़ी है, ये तो QGIS के अंदर है। नहीं, मैंने ये यहाँ प्रोसेसिंग करके I'll just show. I have this प्रोसेसिंग का फोल्डर है क्या आपके पास? हाँ, मैंने बनाया ना। एक कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, ये भी कैंसिल करो।
इसको भी बंद करो आप। ये खुला है ना, ये टोपो शीट वाला जो लेयर है उसको हटाओ, PM छोड़ देना बस, टोपो शीट लेयर्स हटा दीजिए, नहीं हटा दीजिए, इन द सेंस राइट क्लिक रिमूव। ओके हाँ जी हो गया। Now हाँ you add your how to say these you click on that add raster icon. नहीं नहीं नहीं, in the on the सॉरी left side of the screen हाँ there's the add raster icon ना, click on the या add raster icon, click, नहीं वो नहीं है, दूसरा वाला है ऊपर वाला, हाँ खींची, अभी तक क्लिक नहीं हुआ। क्लिक हुआ है, वो टाइम ले रहा है, बहुत स्लो है आज सिस्टम मेरा। ये अपडेट का चल रहा है फिर? वो पता नहीं इसने कुछ किया था, सिस्टम अपडेट्स थे। Okay, now ये source data set आया ना, you click on that triple dot and go to the processing directory and load all the bands now. Yeah, and say instead of all files select TIFF, GeoTIFF, there will be GeoTIFF, yes there, down, GeoTIFF, okay, now select all the files, press Ctrl A and okay, open and okay, add, कर. Not responding. एक मिनट के काम में 15 मिनट लगते। इसी को हम लोग बोलते हैं विंडोज। हेलो। हाँ सर, अभी आपके जो स्क्रीन पर इमेज ओपन किया है सर आपने, तो वो NDVI मैपिंग सर? नहीं, मेरा स्क्रीन अभी शेयर नहीं है राइट नाउ, निधि चड्डा इज शेयरिंग द स्क्रीन। नहीं सर, आपके स्क्रीन के ऊपर जो वो वेजिटेशन का था वो NDVI होता है ना सर? मेरे स्क्रीन पे कहाँ था? हाँ जी सर, अभी जो दिख रहा है। मेरे स्क्रीन पे कहाँ पे कुछ है यार? नहीं सर, पहले आपने जो ओपन किया था। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये एक मिनट, आई विल शेयर माय स्क्रीन अगेन एंड आर यू टॉकिंग अबाउट दिस वन? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस वन? यस सर। नहीं, ये एनडीवीआई थोड़ी है, दिस इज नॉट एनडीवीआई, दिस इज द फॉल्स कलर कॉम्पोजिट, दिस इज नॉट एनडीवीआई। So NDVI has only one band and it is only in grayscale. ओके सर। This is not NDVI. Okay, so now today's lesson is like, first of all, please know that we have got this. Do you have this on your data? The boundary? ये है कि नहीं आपके पास? हाँ सर। Okay, so now we'll do some basic things that we'll first of all understand, and then we will try to progress. In the meantime, Nidhi's processing is going on. We'll try to progress in the meantime. Okay.
So you see what is to be done is, first of all, we will create a temporary layer, and we are not going to shadowify this layer, because if I shadowify this layer, then it will become a problematic issue. So I am going to create a copy of this layer into another one, and then play with it. Okay. So I'm not going to shadowify this layer. So I'm just going to create a copy of this layer. So right click and I say export, and then save features as, and I will save it as a temporary layer. Okay. So just do that. Where is it? Okay, let me see. Suppose, for example, here I just I want to do just temporary. Okay. I just want to say temporary because it's going to do some playing with that. Now ये copy create कर लो पहले. Copy create किया क्या पहले? I will try to create a copy. Everybody. Hands up करो जरा. मतलब, raise your hand. You can raise your hand on the team so that I can know. Okay, Soumitra has done that. Okay, fine. So now on your screen there will be a toolbar. Now see, there are toolbars on the top of my screen. There are toolbars. You are seeing some toolbars here there. These are called toolbars. ये जो ऊपर जो है ना, जो भी ऐसे छोटे छोटे आइकन बना हुआ है, these are what we call as toolbars. So now I am going to enable another toolbar. So let me tell you, you have to go to view and toolbar. ऐसा दिख रहा है क्या? Sir, I think I shall just be understanding it and noting down, क्योंकि वो तो अभी तक buffering ही चल रही है वहाँ पर. हाँ सर, दिख रहा है. Okay, do you have this tool? ये अपना दिख रहा है यहाँ पे toolbar का, यहाँ पे do you see advanced digitizing toolbar? Yes sir. ये इसको enable करो जरा. What you have to do, just click on this and it will ये एक यहाँ पे नया एक बार आ गया होगा. Do you see that? Yes sir. आया सबका? Okay, now here what I can do is I can write on this particular layer. Okay, I can write on this particular layer, or I can create an editing on this particular layer. Okay, तो मैं क्या करूंगा, ये कपड़े का शीट मान लो, इस कपड़े के शीट को अलग अलग काटूंगा मैं. Now first of all understand this cutting mechanism. कपड़े के शीट को कैसे काटते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड. घर में कैसे काटते हैं, तो कैंची लेते अपन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक ए कैंची. आई स्टार्ट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कपड़ा, राइट. वी डोंट स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड द कपड़ा. यहाँ से काटना चालू नहीं करते अपन. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड द कपड़ा. then we'll cut and then we go outside and then final cut. So if I do that, that is the process of cutting a piece of cloth, how we do it in the home. Okay, is this agreeable जो मैं बोल रहा हूँ? Suppose it's a kapda or a piece of paper or whatever. If I have to cut, I have to start from outside and then go and end in the outside. ऐसा ही होता है cutting. Is it okay or not? Yes sir. Hello. 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 Am I audible? Yes sir. Okay. Yes sir. So what I have to do is, now please understand that in this project, whatever we are doing today, what should be loaded onto your screen? First of all, I need to have this layer. ये पहले मैं इसको डिस्प्ले दिया था. You need to have this particular layer जो कि अपन ने
बनाया था, ये है क्या आपके पास? हाँ सर। इधर ये वाला या फिर द पैन शार्पेंड वाला, कोई भी अगर आपके पास हो तो चलेगा. ओके, फॉर मी दिस इज मच मोर यूजर फ्रेंडली because I can interpret what is vegetation and what is not vegetation. Say for example, whatever is red, it is green vegetation. Whatever is green color, that is maybe barren land or something. If you see peacock blue color, you see come here. And you are seeing peacock blue color, the cyan color. These are all urban areas. Okay. ये कलर का इंटरप्रिटेशन समझो. ये जो पिंक कलर के दिख रहा है, these are all agricultural fields. ओके, ये जो दिख रहा है, these are all agriculture fields. Okay. Yes sir. And if you are seeing this particular feature here, this is a hill and this is probably the ridge of the hill or the bottom of the hill, something like that. So these are hills basically. Alright, तो यहाँ पर उनको DM से पता चलेगा. यहाँ देखो ये भी हिल है, राइट, यहाँ पे हिल है. ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? Water body है सर. दिस इज अ वाटर बॉडी. यस, दिस इज वाटर बॉडी. ओके, वेरी नाइस. ये क्या है? ये भी वाटर बॉडी है. ओके, एंड अगेन if you look at this, what is this? This is also a water body. And now tell me one thing, इसका कलर देखो कैसा है और इसका कलर देखो कैसा है. Why are they different in color? Can anybody tell me? डेप्थ का फर्क होगा सर. डेप्थ का फर्क होगा. एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर. ये डेप्थ का फर्क है. ओके, सो इफ इट इज डीपर देन इट विल बी डार्कर इन कलर. ओके, that's the whole idea. So if you see here in this particular feature, the edges are blue in color and this part is dark blue in color. So it's very good that it is what we are talking about. This is basically a depth related issue. So अभी मुझे करना क्या है? This has to be loaded onto your PC, either the pan sharpened one or this one. दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. But it has to be this clipped Aurangabad boundary map. That is what you have to have in your PC online. इसके अलावा you have to have this tehsil map. Okay, this map, this boundary map, and we have to also make sure that they are in the same projection. So you see this is written EPSG and all that. So let us go to properties, and you are seeing that this is UTM, right? This is written in UTM, and we are also seeing this particular properties. So and for this information, it is also written UTM. Both have to have the same projection, otherwise बाद में problem होगा. Okay, now what I have to do is I have created this temporary layer. So I am not going to shadowify this tehsil layer. I want to do with the temporary layer only. Temporary layer का projection देख लेंगे, right click properties, and you see it is in UTM zone 43, and of course it is also in the same line. Okay, no problem, बंद कर देंगे. Now let us do something. Let us enable this, and I am going to play with this particular layer. Let us play. So यहाँ पे दिख रहा है pencil? Yes sir. On your computer, do you see a pencil there? Now this pencil, it means that it is going to toggle editing. Toggle editing means I want to edit that layer. I want to create some features inside that layer, so I can toggle editing. ये देखो toggle. तो ये editing जैसे enable किया, देखो ये off किया, ये enable किया. Now जैसे enable करते, you are able to see that some some gola pola, some islands, icons have started coming here. Do you see this? Yes sir. Okay. Now what I am going to do is this, click on this particular, ये क्या है? ये this is split features and split parts. Okay, we will try to see what happens here. Split features and split parts. Okay, so split features we will do. Click. What is splitting is cutting. Okay, that is what I am trying to do. Okay, now when I have to cut, please remember I have to cut, clip. So I will start from here. Okay, बाहर से start करना है
और बाहर तक एंड करना है, ये मैं ऐसे काटूंगा उसको। ओके, सो आई एम गोइंग टू कट, प्लीज पे अटेंशन हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। सो आई एम गोइंग टू क्लिक, लेफ्ट क्लिक हियर, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक and right click. Okay, now please see this, what has happened. I will just right click here and show attribute table. How many features do you see? How many lines do you see? कितने लाइन दिख रहे हैं यहाँ पे? Just for the sake of doing it again, I just Control Z, मैंने Control Z कर दिया, that means undo कर दिया, undo किया, so I am seeing the attribute table. अभी कितने लाइन दिख रहे हैं यहाँ पे right now? How many lines? Am I audible? Yes sir. हाँ, कितने लाइन दिख रहे हैं? एक ही दिख रही है। अभी एक ही लाइन है, ठीक है ना? नाउ आई एम गोइंग टू डू द कटिंग। तो यहाँ स्प्लिट फीचर क्लिक किया एंड देन अगेन लेफ्ट 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 एंड देन राइट क्लिक। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट हैज हैपेंड हियर। ओपन द एट्रीब्यूट टेबल। अभी कितने दिखा? दो, अभी दो दिख रहा है। अभी दो गए, मतलब पेपर को मैंने दो पार्ट में काट दिया है, ऐसा हुआ ना, वो काट दिया मैंने उसको। ओके, then again I am going to do some cutting here again. So I start from here, left 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 left. I'm just doing arbitrary now, बाद में अपन सिस्टमैटिक करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। अभी कितने पार्ट होने चाहिए? एक दो तीन, तीन दिख रहे हैं क्या? ओपन एट्रीब्यूट टेबल कर, तीन दिख रहा है? हाँ सर। सर मेरा वो क्लिप वाला इनेबल ही नहीं हो रहा है। So how do you clip wala enable? Go to view, toolbars and then advanced digitizing toolbar. ये enable किया क्या आपने? सर एक मिनट में वापस चेक करती हूँ। हाँ सर वो इनेबल्ड है। Okay, so now you have to select this layer, whichever you want to edit. You have to select this layer and then press the pencil icon. If you press the pencil icon, then only this thing will be enabled. ऐसा नहीं चलेगा कि रास्ता लेयर पे गया फिर पेंसिल आइकन दबाया, नहीं चलता वो। जिस लेयर को एडिट करना है, whichever layer you want to edit, that only you have to click and then only that working will happen. Otherwise कुछ भी नहीं होता। Okay, now again we'll cut again. So let us cut again. So split feature icon दबाया, split feature icon दबाया, cut left 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 and right. अभी देखो मैंने राइट क्लिक किया ना तो नहीं चलेगा। सो अगेन विल डू द लेफ्ट 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 लेफ्ट, बाहर जाके लेफ्ट एंड देन राइट। अभी कितने फीचर हो गए? एक दो तीन चार, कितने हो गए फीचर? चार हो गए सर। चार हो गए ना। तो यहाँ पे चार बने क्या? देखो बन गए ना चार। हाँ सर। ओके, अब मैं देखो ऐसे कट मार सकता हूँ, यूं करके कट मार सकता हूँ, राइट। ओके, सो आई जस्ट डू द कटिंग फ्रॉम हियर। इट इज नॉट नेसेसरी, यू हैव टू सी, सपोज आई हैव टू कट दिस पीस, ये वाला जो पीस है मुझे उसको काटना है। सो हाउ डू आई डू? लेफ्ट 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 एंड राइट, कट गया।
सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अभी आप लोगों को क्या करना है, यू आर सपोज टू डू दिस प्रोसीजर, ऐसे आर्बिट्ररी कट मारो और कट मार के मुझे वो प्रोसीजर दिखाना है। अच्छा, ये तो होमवर्क, ये तो अभी करना है, बट बिफोर दैट वन मोर थिंग। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट आई वांट यू टू डू इज, व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि इसका एरिया कितना, 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 ये एरिया निकालना है मुझे। ओके, this is a common problem. How much area is contained in a polygon? Okay, now suppose this question is asked to you, how do you find out that area? This question I am going to answer. All right, is it understood what I am trying to say? I want to calculate the area of each of these polygons. Okay, understood? So how do I do that? Now there are two methods of doing this. One is the very आंखों को दुख पहुंचाने वाली मेथड है, एंड दूसरा जो है बड़ा सिंपल मेथड है। कौन सा मेथड आप प्रेफर करोगे बताओ? आंखों को दुख पहुंचाने वाला मेथड के सिंपल वाला मेथड? सो इन द आंखों को दुख पहुंचाने वाला मेथड द स्टेप इज बिट डायरेक्ट। ओके, सो व्हाट विल डू, द आंखों के दुख पहुंचाने वाला मेथड करेंगे, राइट क्लिक एंड ओपन द एट्रीब्यूट टेबल। So remember that right now your editing is in the editing mode. यहाँ पे editing mode में है right now. See, the pencil is depressed right now. Pencil is in the depressed position. Okay, so right click करेंगे, silent में, so right click करेंगे and open the attribute table. Please do that. Suppose I open this attribute table, and in this attribute table there will be an icon which says new field. दिख रहा है क्या on my screen and on your screen also? Can you see new field? Yes sir. Okay, so what you have to do is new field create करो। Okay, तो देखो अभी क्या है, on my screen there are these hundreds of things which are there. Okay, I have to create a new field. All these column names are called fields in the language of database. ये जो var name है, nl name है, eng type वगैरह वगैरह है, जो भी ऐसा अजीब अजीब से लिखा हुआ है यहाँ पे, there you have to create another column. I want to create another column which will have some name. Okay, so let us suppose I want to create a new field and click on this icon. देखो बताओ ऐसा आया क्या अपने पास? हाँ सर. Okay, and I will name this field as मेरा area. Okay, don't press OK right now. मेरा area. Now please tell me, area में decimal point हो सकते हैं कि नहीं हाँ हो सर. सकते? decimal point हो सकते हैं ना? That means I cannot use this word integer. I cannot use integer, so I have to use a real number. So you choose decimal number. किया क्या ऐसा decimal number? हाँ सर. Okay, and I just press OK. करो OK. तो as soon as I do OK, please tell me मेरा area नाम का एक आया है यहाँ पे. हाँ सर. आया क्या? हाँ सर. Now I have to calculate the area. अभी मेरे को एरिया कैलकुलेट करना है, तो हाउ डू आई डू दिस? नाउ प्लीज सी वेदर ऑन योर स्क्रीन यू आर सीइंग दिस FID रिटन हियर. FID, यहाँ FID दिख रहा है क्या यहाँ पे? हाँ सर. सो नाउ इन दिस यू सिलेक्ट दिस फील्ड कॉल्ड मेरा एरिया. सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाके मेरा एरिया सिलेक्ट करना है. किया? हाँ सर. ओके, नाउ यहाँ पे एप्सिलॉन दिख रहा है.
Yes, sir. हाँ Okay. Now what I am going to do is I am going to write dollar area. इतना लिखा है डॉलर एरिया, बस इतना टाइप करो। किया क्या? हाँ हाँ, एंड डॉलर एरिया टाइप किया एंड देन प्रेस अपडेट ऑल, जस्ट प्रेस अपडेट ऑल बटन। तो नाउ टेल मी ऑन योर फील्ड, नया वाला जो फील्ड है उसमें ये मेरा एरिया टाइप होके आ गया क्या? हाँ सर। Hello. Huh? So all the values which you are seeing right now, do you see the values calculated? Yes, sir. Okay. So all areas are now shown on this particular. Now what are the, can you tell me what is the unit of this area? it's a meter. Unit of area. है ना? So it will be square meter. Okay. The area is in square meters. Now suppose for example, I wanted the area in square kilometers. Please tell me what to do. Suppose for example, I am not interested in square meters. I want the area in square kilometers. क्या करना पड़ेगा मुझे? वन किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000. यस, सो स्क्वायर सपोज 1000 होता है ना, तो अगर मुझे स्क्वायर किलोमीटर में चाहिए, सो आई जस्ट डिवाइडेड बाय 1000 देन 000, इतना 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर देने का, एंड देन यू विल गेट द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, एंड जस्ट डू दैट। देखो ये स्क्वायर किलोमीटर में एरिया आ गया। डू यू सी? Yes, sir. All right, so what has happened right now here is we have been able to compute the area of the sub polygons that we actually have digitized. Okay. Yes, sir. Well, now this is the elementary procedure that we have to learn for doing this. Elementary procedure. That means till now what we have done, जब से क्लास चालू किया तब से हमने सीखा क्या है? How to cut a polygon into sub parts, number one. Then number two, how to calculate the area in square meters. And number three, how to calculate the area in square kilometers. That we have done. We have also learned how to, how to create a new field. Okay. Now here you see, here is one thing is happening here, is that ये जो जितना भी ये तुंतरू फुंतरू लिखा है ना, ये मुझे नहीं चाहिए। ये जो नेम अंडरस्कोर 1, ID अंडर नेम 2, ये सब ये मुझे नहीं चाहिए। I don't want them. Okay. So what we can do is, we first of all इसको सेव कर लेते हैं अपन। ये यहाँ पे देखो सेव एडिट्स दिख रहा है, सेव एडिट्स। हाँ सर। तो ये सेव एडिट्स कर देंगे। Once you have saved the edits, so you can, okay, अरे ये क्या हुआ? And then fine. So save the edits. So make sure that all your area is computed, and then okay. So now what has happened is we have been able to calculate the. Now the thing is, I go to properties. Go to properties. What is interesting to me right now is the polygon and the area.
इसके अलावा nothing else is interesting to me. Look here, right now we have so many fields right there. यहाँ पे इतने सारे फील्ड है, मुझे क्या चाहिए, मेरा एरिया चाहिए, और बाकी ये जो चीजें हैं ये मुझे नहीं चाहिए. So what I can do is click on here, press shift and press shift up to here. Can you do that? देखो क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबाओ और यहाँ क्लिक करो. यहाँ तक सिलेक्ट हुआ. Are you able to do that? Yes, sir. If you are able to do this, you will be also able to see यहाँ पे, यहाँ लिखा है क्या, क्या लिखा है यहाँ पे, delete field. Okay, so all those columns which will be there, you can delete them. So press on this icon and see what happens. Delete the field. देखो यहाँ पे ये बनता बचता है क्या नहीं. हाँ सर. Okay, and then press this, इसको बटन को बंद कर दो, and then you can click on this particular icon. ये जो toggle editing कर दो ऐसे, and I say save, and please see that if I see the attribute table now, I only have 2 columns. Do you have 2 columns right now? FID and मेरा area. बस इतना ही columns मेरे पास रखे हुए हैं. Do you see this? Yes, sir. ठीक है. So I should be able to do this. As have you been able to do that? Everybody, please जो हाथ hand up करो जरा. मुझे देखने को दो, hand up तो करो जरा. Okay, Soumit is other is done. What about other people? निहारिका तो इधर ही बैठी हुई है. Rishikesh okay done. Priyanka done. Shivam was done. Bibi is still, उसका प्रोसेसिंग चल रहा है शायद. I'm still struggling. Yes, yes. Don't worry, you can learn this procedure. Huh? Just Yeah, I guess that's somebody has turned on the recording, so that's great. Okay, so what we have done is right now we have been able to create sub polygons, and we have been able to create areas. We have learned how to delete fields, how to add fields, and all that kind of stuff we have learned. Now, how do I apply this learning? ये जो अपन ने आधे घंटे में सीखा है, I have to apply this learning to my LULC calculation. Okay, so we are going to apply this learning to my LULC computation. ये हम करेंगे. Okay, so but before that, let us fix some symbols. Yes, fix some numbers. We are going to fix some numbers. क्या क्या numbers अपन करेंगे देख लेते हैं. So what I am opening right now is a presentation. Just ऐसी random है. एक presentation खोल, ये presentation दिख रहा है ना आपको? Just cancel. I'm just opening some blank thing here. Okay, so here I'm just writing ID and I'm writing LULC. Okay, so यहाँ पे please see, I am going to say 1. This 1 is going to denote agriculture, and you can try to note this down. हाँ, कहीं पे अपने पेपर पे लिख लो. 1 means agriculture, 2 means urban area, suppose. 3 means water body. Just note this down so that this will help you. So this water body, urban area, water body, और कुछ है tree canopy. Okay, then 4th is barren lands. Okay, so I am just using these land cover, land use, land cover classes. Is it okay?
I am just trying to use these 5 land cover land use classes. ठीक है, what I have to do is identify these areas and we have to mark them on the map. ये करना है. Now the larger part will be of your homework. ठीक है, and fourth part अपन क्या कर सकते हैं, urban area है. Okay, fine, no problem. Urban area, तो मान लो some people can also say कि मुझे road चाहिए. So roads, just for the sake of argument, roads वैसे दिखेंगे नहीं, but will be, because this is Landsat imagery, तो roads दिखना मुश्किल है. Okay. So this is what we have, and we have got 6 land use land cover IDs, and we are going to use this to prepare our map. All right, fine. So let us go back to our desktop, and we'll remove this temporary layer if you want. I'm just okay. So मैं इसको remove कर दूंगा. I'm just going to remove this, and okay. So now, right now, what we have got this is this. Abhi, let us do one thing. What I am going to recommend to you is, for the simplicity of work, I am going to recommend to you that we split the area into sections of 1 kilometer by 1 kilometer. That means I am going to divide this entire Aurangabad region into sections of 1 kilometer by 1 kilometer. Now, please tell me whether you have seen, we are able to see research tools and create grid. Do you see something like create grid on your computer? So where do we need to see that? Plug. Okay, again, close here. You are going to say vector and research tools and create grid. Please tell me if you are able to see this. If you are not able to see this, then some setting has to be done. ये दिख रहा है क्या सबको? Rishikesh, yes. Soumitra, what about you? Shubham, yes. Yes sir. दिख Okay. रहा है सर. Okay, fine. So यहाँ पे create grid करना है. ये create grid करेंगे क्या आपने? क्यों? I'm just saying 1 kilometer by 1 kilometer. For the sake of simplicity, you can do more detailed ones. Okay. So now what we have seen, grid type you are seeing point grid, and there are square grids, polygon grids, or etc. etc. So what we are trying to do is create grid. Okay. So यहाँ पे अपन क्या करेंगे? Rectangle. Select rectangle, please. All right. Have you done that? हाँ sir. Okay. Now Yes, you sir. see on my map here, there is this vector layer, Aurangabad Tehsil 43N, जो औरंगाबाद की बाउंड्री लेयर है, वो है ना आपके मैप में? हाँ sir. Okay. Now what you are going to do is I am going to select this, ये जो triple dot है, I just click on this and then calculate from layer. यहाँ पे दिखा calculate from layer. Yes sir. And what you do is you select this Tehsil boundary. You can select, you select the Tehsil boundary, yes. Done? Have you done that? Yes sir. So if you select the Tehsil boundary, automatically ये fill होके आ जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है. Now I said 1 kilometer by 1 kilometer, right?
तो यहाँ पे देखो 1 मीटर है, तो मुझे क्या करना चाहिए, या तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो किलोमीटर, यहाँ सिलेक्ट कर लो किलोमीटर, ठीक है। किया क्या ऐसा? हाँ सर। किलोमीटर बाय किलोमीटर कर लिया। ओके, नाउ वंस यू हैव डन दैट किलोमीटर बाय किलोमीटर, and let this create a temporary layer, because I will not require that layer later, so I am just going to create a temporary layer. Okay, and I just say run, करो जरा run, run, run. Now please tell me कि ऐसा दिख रहा है आपके पीसी पे? ऐसा दिख रहा है क्या? ये जो ग्रिड है ये दिख रहा है आपको? हाँ सर। So what has happened is each of these grids have an area of how much? कितना एरिया होगा इसका? 1 किलोमीटर स्क्वायर। हाँ, 1 स्क्वायर किलोमीटर एक एरिया होगा, करेक्ट है। ये अपन कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नाउ यू सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, माय आइडिया वाज टू डिवाइड दिस पॉलीगॉन, लेकिन मेरा जो है ये एरिया बाहर भी है ना। माय आइडिया वाज टू डिवाइड दिस पॉलीगॉन इनटू सर्टेन व्हाट यू कॉल इट पॉलीगॉन्स, ये मुझे चाहिए था, लेकिन बाहर में एरिया है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, वी आर गोइंग टू इंटरसेक्ट this boundary layer with the grid layer. We are going to intersect. कैसे होगा intersect? Go to vector, go to geoprocessing, यहाँ intersection दिख रहा है। हाँ सर। So select intersection. Okay, the input layer is above tehsil, and what I want to do is overlay with the grid. All right. Yes sir. And now अब मुझे क्या करना है? Run. मैं अभी क्या करने वाला हूँ? रन करने वाला हूँ। Let this be a temporary layer. For now, this will be a temporary layer. I am going to say run now. Run हो गया, and I close. Now please tell me कि मुझे ऐसा मिला है। हाँ सर। ऐसा मिला ना? So what has happened is I have divided the entire Aurangabad Tehsil into blocks of 1 square kilometer each. Correct? Yes sir. है ना? अब एक बात बताओ मुझे, इन सारे ब्लॉक्स का मुझे एरिया निकालना है। यू सी देयर आर सर्टेन ब्लॉक्स व्हिच डोंट हैव फुल 1 स्क्वायर किलोमीटर, करेक्ट? दे डोंट हैव, है कि नहीं? नहीं, दे डोंट हैव। अभी मुझे ये बताओ कि इनका एरिया निकालना है, तो क्या मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट डू आई हैव टू डू? वी हैव ऑलरेडी डन दैट एक्सरसाइज राइट नाउ। Sir, we So have I have to, to we have to layer, in the layers we'll see, sir, layer properties. properties. सर इसमें पहले वो फील्ड ऐड करनी पड़ेगी एरिया की। Yes, we can do that. Okay, In so I the, just true. So I just open toggle editing mode. Okay, and then यहाँ पे add field होगा ना, add field कर दो। तो यहाँ पे क्या नाम देंगे उसका? मेरा सपोज, मेरा एरिया सपोज, बराबर। ओके, और यहाँ पे टाइप क्या होना चाहिए? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, यस। ओके, एंड देन से ओके, राइट? किचिंग। तो एरिया नाम, मेरा एरिया नाम का क्रिएट हो गया, करेक्ट? बाकी ये सब चाहिए क्या? तुंतु फुंतु? नहीं सर। नहीं चाहिए, वो हटा देंगे इसको, इसे
ये तुंतुर फुंतुर जो है ना, ये मुझे नहीं चाहिए. FID छोड़ देना. जस्ट लीव द FID, अदरवाइज सब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ओके ना, ये छोड़ देंगे फिर बाद में टक. ओके, सो नाउ वी आर रिमेनिंग विथ 2 फील्ड्स. इसको बंद कर देंगे. राइट नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द एट्रीब्यूट टेबल. तो मेरे पास ऐसा आ गया. आया कि नहीं? हाँ सर. आया सबका ऐसा? एवरीबडी हैज गॉट दिस? प्रियंका, श्रुति, सौमित्र, शुभम. सर मेरे इसमें FID लेयर ही नहीं है सर, वो फील्ड नहीं है. उड़ा दिए तुमने. उड़ा दिए. नहीं सर, मतलब डिलीट नहीं किया मैंने अभी तक, और वो FID फील्ड दिख ही नहीं रहा है मेरे इसमें. होना चाहिए. एनीवे जोड़ जाने दो, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाद में. एनीवे, सो आई हैव टू नाउ कैलकुलेट द एरिया वैल्यूज. हाउ टू डू दैट? यू पुल डाउन एंड एरिया. और यहाँ पे क्या टाइप करना चाहिए मुझे? डॉलर एरिया. Dollar area, yes. So you just type dollar area, okay. And if I want the area in square kilometer, what should I do? 10 to the power 6. Divided by 10 to the power 6. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And then update all. Okay. Something is coming here. Sir, I'm facing problem. And hello. Sir, Yes, tell me. सर वो ये जो मेरा एरिया वाला पार्ट है वो नहीं आ रहा है मेरे इसमें. आपका एरिया वाला पार्ट नहीं आ रहा. ओके, एक मिनट. मैं शेयर करूँ क्या स्क्रीन? Yes, please do that. हाँ ना, नहीं है ना. ठीक है ना. तो गो, यू कट करो इसको कट करो. करेक्ट. राइट क्लिक ऑन दिस. राइट क्लिक ऑन इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज. नाउ गो टू फील्ड्स. यस. देन यू क्लिक ऑन द पेंसिल एंड क्रिएट न्यू फील्ड. क्लिक ऑन द पेंसिल. हाँ, बस क्रिएट न्यू फील्ड. नहीं, उड़ गया. क्लिक ऑन द पेंसिल, एनेबल एडिटिंग. हाँ. नाउ देन क्लिक ऑन द फर्स्ट आइकन. नहीं, फर्स्ट आइकन on the top. Okay, now add field. Area, mera underscore area. Something like that. Yeah, then it has to say principal. Then okay. So area again है नीचे. देखो. Again now you select all these through fields and you delete them. Otherwise, delete नहीं करें. Okay. सर बट वो FID वाला लेयर नहीं आ रहा है तो. Leave it. Don't worry about it. So you just select from GID and then come up to, and then press shift and do that up to bottom. Okay, and then delete the field. Yes, मेरा आ गया. Okay, close. Right click. Yes, and then calculate this area. मेरा area equal to dollar area. नहीं, हटाओ पूरा फॉर्मूला. dollar area and then update all. Yes, okay, all those values are coming, right? आ गया ना? Okay, so now should I share my screen again? Okay, so
everybody has got this. We have been able to compute all the values, right? अब हम Yes. लोग क्या करेंगे? Now, अब जो है सबसे insensitive काम है. Please understand, सबसे sensitive काम अभी चालू होगा. Okay? So, ये जो हमारा जो इंटरसेक्शन लेयर है, इसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? परमानेंट कर लेते हैं, सो दैट आवर वर्क इज नॉट लॉस्ट. ओके, जिसको हम परमानेंट कर लेते हैं. सो हाउ डू आई मेक इट परमानेंट? राइट क्लिक एंड मेक परमानेंट. ओके, सो यू आर सीइंग राइट नाउ यहाँ पे ये ऐसे ये बना हुआ है, टेम्पररी स्क्रैच लेयर ओनली. इट इज रिटन राइट क्लिक एंड मेक इट परमानेंट so that our work is not lost. Yes, sir. So this issue actually I was facing while doing also. So there were 3-4 layers while the time of assignment. That 4 layers were missing out. So yes, however times I add, it was not doing. yes, so that's, see, you have to make it permanent, otherwise it gets lost work. Okay, so that भैया अपना क्या है ये, because I am telling you to do this because this will be your CA2. तो ये CA2 आपको इवनिंग तक मिल जाएगा, ये आपका CA2 है. ओके, सो दिस द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू टू डू दिस. ऑलराइट, सो आपको करना क्या है कि लैंड यूज लैंड कवर का क्रिएट करना है. सो नाउ यू हैव गॉट फॉर्मेट एंड जियो पैकेज. आई हैव डन दैट. फॉर्मेट जियो पैकेज आई हैव सिलेक्टेड. देन यहाँ पे फाइल नेम है, सो आई जस्ट सिलेक्ट वन फाइल नेम एंड आई एम गोइंग टू save it like somewhere here. So I'm just going to name it as LULC CA2 something like that. Okay, मैं CA2 नहीं करता, मैं LULC, आप लोग CA2 करना. तो LULC और यहाँ पे सेव करना है. ठीक है, सेव एंड ओके. ये क्या हुआ? अच्छा, वो भी देखो, ये प्रॉब्लमेटिक इशू है. ओके, एक मिनट. Just a moment, because I think some unique FID in QGIS there is. मेरा तो क्रैश कर गया सर सॉफ्टवेयर. क्रैश नहीं होना चाहिए. क्रैश हो गया तो दिक्कत वाला काम है. So I'm just going to do make permanent. Before I do make permanent, we need the attribute table. Let us see. Dot row. अरे okay, so you write FID is $ID, so I've just done that, and okay, and I'm now going to make it permanent. Okay, so first of all, I'm just saving layer edits and right click and make it permanent, and I'm just going to save it as LULC. Okay, overwrite. Bye. सर वो लेयर को परमानेंट सेव करने के पहले वो आईडी वाला करना है क्या? $ID डालना है क्या वहाँ पर? If your FID is not being seen here, please see. If you can't see your FID here on Linux, on my QGIS, on Linux it is showing FID here. Okay, but maybe on your system this FID is not seen here. Is it okay? Maybe on your screen it is not shown. Okay, because I don't know, Windows has a separate kind of nakra. So if FID is not seen, very good.
then you can do without it. But if it is FID is being seen, then you do $ID. अच्छा दिख रहा है क्या आपको? कर दिया क्या मेक परमानेंट? सर मैंने मेक परमानेंट किया है बट मुझे वो FID नहीं दिख रहा है वहाँ पर। कोई बात नहीं, मेक परमानेंट हो गया ना आपका? हाँ सर। सो ओके फाइन। सो ये क्या है अभी? सो इट इज ऑलरेडी LULC GPKG नाम से सेव हो गया। सो मैं इसको रीनेम करता हूँ। सो दिस इज माय LULC लेयर। ओके LULC क्या कर रहा हूँ मैं? Rename. So I'm just typing as LULC. अभी प्लीज टेल मी ये कि आपके पास ये आ गया है कि नहीं आ गया? ये LULC आ गया है सबका? और ये जो ग्रिड है इसको हटा देंगे, डिलीट, बिकॉज वी डोंट रिक्वायर दिस। नो प्लीज टेल मी ये आ गया है सबको इस LULC लेयर? जिसका आ गया वो हैंड्स अप करे जरा। व्हाट अबाउट सौमित्र दादा? सर वो जब मेक परमानेंट कर रहा हूँ ना, ये सॉफ्टवेयर फ्रीज हो जा रहा है सर। अच्छा ऐसा होना नहीं चाहिए। एक काम करो, आप राइट क्लिक करो यहाँ पे, यू कैन डू दिस, राइट क्लिक एंड एक्सपोर्ट। हैव यू डन दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेंसिल टर्न ऑफ करो, ये जो पेंसिल है ना उसको पेंसिल को टर्न ऑफ करो। मे बी यू कैन सी अ पेंसिल देयर ऑन योर ऑन द लेयर। यहाँ पे अगर पेंसिल रहेगा ना तो यहाँ पे पेंसिल दिखता है ऐसा। ओके सो ये पेंसिल को टर्न ऑफ करो, सेव ऑल द एडिट्स एंड राइट क्लिक एंड एक्सपोर्ट इट। अगर आपको मेक परमानेंट करने से प्रॉब्लम हो रहा है, राइट क्लिक एंड एक्सपोर्ट एंड सेव फीचर्स एज, ऐसा कर लो। ओके That सर, ये अभी also फ्रीज works. हुआ है सर, वो रिपीट करता हूँ मैं फिर से। Okay, do that. Yes. सर सेव एज क्या करेंगे? Save as GPKG, shape file, Okay, whatever. okay, GPKG और shape file, yes, you can do that. ये कौन बोला? ये दो अलग अलग आवाजें आ रही है मेरे को। नहीं सर, मैं शुभम बोला सर। अभी इसके पहले कौन बोला था? सौमित्र बोला था। अच्छा ओके। ओके सो प्लीज टेल मी कि ये आ चुका है सबका कि नहीं आया? जिसका जिसका ये कल्याणी कुलकर्णी अभी आई क्या? हाँ सर, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट था तो मैं जस्ट ज्वाइन हूँ 2 मिनट। सर मुझे प्रोसीजर समझ गया है, मैं बस पीछे एक स्टेप थोड़ा पीछे रह गया था, तो यहाँ तक आया नहीं हूँ, बट आई हैव अंडरस्टूड द प्रोसीजर। मेरे इसमें अभी वो FID बता रहा है, तो वो $ID कर लो ना। Okay, now if you are up to here, up to this point, if you are here, now what you have to do is ये जो LOLC का जो लेयर है या फिर औरंगाबाद का जो ये क्लिप्ड लेयर है, you bring it down. Okay, so now please tell me कि ये ऐसा है, I mean if you turn it off, ये इसके ऊपर होना चाहिए, ऐसा दिख रहा है कि आपको? ये सब जो DM है सब नीचे कर देंगे, मैं सब नीचे कर दे रहा हूँ। प्लीज टेल मी कि ये ऊपर से, ये ऊपर होना बहुत जरूरी है। And I will also take this full rest thing down. ये LULC layer must be the topmost layer on your GIS map. ऐसा है क्या? Make sure this happens. All right. सबका हुआ क्या है?
हाँ सर हो गया। Okay, now here I am going to set the property of LULC. Okay, what property? I am going to set the symbology property of LULC. What symbology? ये जो fill color है ना, ये fill color में गायब करूंगा. Right now I am going to do गायबिंग. हाँ? तो अभी एक काम करेंगे, सबसे पहला दो काम माना. Number one, I have to create a new field in this layer. That new field will be named LULC. And in that new field, I am going to put these IDs 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये मुझे डालना है उनमें. Okay? Is it okay? Understood? What I am going to do? I am going to do two things. Number one, step number one, I am going to create a new field called LULC inside this particular layer. This is step number one. Number two, I am going to insert the symbology for these land use land cover layers. तो अभी ये बताओ, एग्रीकल्चर के लिए कौन सा कलर डालोगे, अर्बन एरिया के लिए कौन सा कलर डालोगे, वाटर बॉडी के लिए कौन सा कलर डालोगे, ट्री कैनोपी के लिए कौन सा कलर डालोगे, बैरन लैंड्स के लिए कौन सा कलर और रोड्स के लिए कौन सा कलर. ये कलर अपन पहले से डिसाइड कर लेंगे और उसके बाद वही कलर उसमें मैप में डालना है. ओके, यू कैन डिसाइड ऑन द कलर. आई गिव यू द फ्रीडम टू डिसाइड ऑन द कलर, बट द कलर शुड बी स्टैंडर्ड कलर. एग्रीकल्चर का तुमने मरून कलर में एग्रीकल्चर नहीं दिखाना है. आई मीन इट शुड बी रियलिस्टिक कलर. Okay, so now here we are going to do some amount of jugglery. So first, what is the first jugglery? The jugglery number one, we are going to do creation of a particular field in this particular layer. That field will be named as LULC. So how do I do that? Right click, go to properties and go to fields. And यहाँ पे देखो, यहाँ पे LULC नाम का कोई भी field नहीं है. And I am going to start editing here. And I am going to put another field called LULC. Okay, LULC. All right. Inside this particular layer, I have created a new field called LULC. Is it okay? Yes sir. And I say सर okay. उसका टाइप क्या रखना है? Type integer. देखो 0, 1, 2, 3, 4 रहेगा तो इंटीजर ही रहना. हाँ सर. ओके. ओके. सर ये LULC वाला पैन शार्पेंड इमेज भी रह सकता है ना? मतलब पैन शार्पेंड इमेज लिया तो ठीक है या? no, this is a vector layer. ये vector layer है. This is the vector layer and we are doing shadowifying on the vector layer only right now. इसके नीचे कौन सा इमेज है, पैन शार्पेंड इमेज है कि नॉन पैन शार्पेंड इमेज है, वो बाद में देखेंगे. बट नीचे ये जो है वेक्टर लेयर है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट हियर. ओके, LULC किया एंड देन आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ द एडिटिंग हियर and it will say save, and I have been able to create the LULC layer and see that attribute table. On this attribute table LULC नाम का blank field यहाँ पे create हो गया है. Do you see this? Blank field has been created in the LULC. Okay? Yes sir. Okay. Now ये blank, please confirm by raising your hand कि blank fields have been created on your layers. बाकी सब पीछे चल रहे हैं ना? Yes sir. हो गया क्या शुभम? नहीं सर, मैं वो पीछे चल रहा है उसको यस बोला. अच्छा. ओके फाइन. सो अभी मुझे करना क्या है? राइट नाउ इसको बंद करता हूं मैं. आई हैव क्रिएटेड दी LULC लेयर हियर. ओके, सो मैं इसको बंद करूंगा अभी. नाउ प्लीज सी
very carefully. This step is going to be helpful for your CA2. Okay, तो यहाँ पे important काम है. अभी मुझे करना क्या है? I am going to double click this. Cut. Go to symbology. सबका ऐसा है? हाँ सर. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल फिल लिखा है. You see simple fill? हाँ सर. And right now यहाँ पे लिखा है fill style. You see fill style? हाँ सर. इसको क्लिक करो और यहाँ पे टूथ ब्रश, नो ब्रश करो, नो ब्रश. You see no brush? हाँ सर. नो ब्रश. ओके, नो ब्रश किया एंड अप्लाई कर दो. जस्ट डू अप्लाई एंड ओके. टेल मी व्हाट यू सी राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन. ऐसा ही दिख रहा है क्या आपके स्क्रीन पे? हाँ सर. ऐसे दिख रहा ना? हाँ सर. Okay, so that means right now what you are seeing on your screen is all grids and उसके नीचे औरंगाबाद का क्लिप्ड इमेज. आपके पास अगर पैन शार्पेंड इमेज है, वेरी गुड. अगर नहीं है तो ये वाला भी चलेगा. ओके, एवरीथिंग ओके ना? Yes sir. Okay, so just a moment. I don't know whether I have the. Okay, just a moment. Okay. अच्छा, वो पैन शार्पेंड इमेज है अपना, वो नहीं. So we have to create that. Okay. Anyway, so we have got this, and now what we are expected to do is put the symbology into the system. What symbology? मुझे color decide करना है इसका. Okay, and we are going to put the symbology into the system. Okay, now अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर QGIS में जाएंगे. ये QGIS में गए. Now you are seeing this in this Aurangabad clip layer is there. The LULC layer is there. Double click on this LULC and यहाँ पे single symbol दिख रहा होगा आप लोगों को. You see single symbol? यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ सर. Okay, now you are going to say categorized. यहाँ पे लिखेंगे categorized. Okay, just do categorized here. And then यहाँ पे in this you select the LULC. All right. हाँ सर. Now यहाँ पर you just click on plus. Plus. How many classes we had? 6. Okay, so what is the first value? First value is 1, right? 1, then 2, then 3, then 4, then 5, and then 6. Okay, 6 values हो गए. इसके अलावा एक और वैल्यू जो है जो खाली होगा. Okay, now what was 1 for? Agriculture. Agriculture. So 1 was, I'm going to type agriculture. Okay, 2 was Urban area. Urban area. Okay, fine, no problem. The third was Water body. water body. Okay, third was water body. Okay, no problem. What was fourth? Tree canopy. Tree canopy.
tree canopy. Okay, what was the fifth one? Barren land. Barren land. Barren land. So, okay, what is the sixth one? Roads. 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 So, okay, and all other will be no fill. Okay, now see all other, यहाँ पे कलर दिया हुआ है, ये कलर को मैं क्या करता हूँ, सिंपल फिल को जाके यहाँ पे नो ब्रश कर देता हूँ. Just that is what I am going to do. So that means the other colors will be remaining without any color. Okay, now let us decide on what color we'll have agriculture. Now what we'll do also at the same time, एक चीज हमेशा याद रखना है कि we are going to, यहाँ पे देखो स्टाइल दिख रहा है, यहाँ पे do you see स्टाइल, लेयर रेंडरिंग में यहाँ पे स्टाइल दिख रहा है नीचे on the bottom of your screen you must be seeing a style here. So Yes, sir. you can, so what you do is save the style. Just save the style. Why should I save my style? If I save my style, that will let me reproduce maps in the same color. So suppose for example, I've got a 2006 ka satellite image, then I've got 2013 ka satellite image, then I've got 2019 ka satellite image, then I've got 2021 ka satellite image. And if I'm preparing LULC maps of these years, all the maps should have the same colors for the same land use. Correct, Hannah? हाँ सर. So before we save, first of all let us agree on the colors. Agriculture का कौन सा कलर देंगे? अपन क्या करेंगे? लाइट ग्रीन देंगे. हाँ, एग्रीकल्चर का लाइट ग्रीन. सो डबल क्लिक एंड यहाँ सिंपल फिल में जाने का एंड विल सिलेक्ट द लाइट ग्रीन कलर. बताओ भैया ऐसे कौन सा कलर, ये कलर चलेगा क्या? एकदम चमकीला ग्रीन. ये कलर सिलेक्ट कर सकते हैं. चलेगा क्या ये कलर? Yes, sir. So you can, I'm just selecting this color, so you can select थोड़ा सा ऐसा वाला कलर ले लेते हैं and I'm just saying okay. So एग्रीकल्चर का कलर मेरा वो ग्रीन सिलेक्ट हो गया. अर्बन एरिया का कौन सा कलर देंगे बताओ? रेड दे देते क्या? रेड. Yes, sir. I will delete red. अर्बन एरिया को रेड में. So we have to go to simple fill and just click on the field color and select the red color from there. So let us suppose we are going to the red. Okay, ये वाला कलर चलेगा? तो यार ये रानी कलर हो गया यार ये. हाँ, ये रेड चलेगा? Yes, yes, sir. And okay, and I just selected the color, no, red color there, and I'm saying okay. So urban area को red color दे दिया. Water body को कौन सा कलर देंगे? Blue color, right? Water body blue color. So deduct. Again go to simple fill. अब मुझे क्या करना? Fill color में क्लिक करना, blue color select करेंगे. ये कलर, अरे बहुत ही एकदम भद्दा कलर है. Okay, and what about this color? ये चलेगा कलर? Yes, sir. थोड़ा लाइट भी चलेगा सर या फिर डार्क भी? हाँ, थोड़ा लाइट कर दिया मैंने एज पर योर सजेशन एंड ओके कर देता हूँ. ओके, ये कलर मैंने सिलेक्ट कर दिया. अच्छा, ट्री कैनोपी का क्या करेंगे? थोड़ा सा डार्कर ग्रीन ले लेते हैं. ट्री कैनोपीज विल बी डार्कर ग्रीन. ओके, सो यू गो टू कलर एंड डार्क ग्रीन. होटल में ये कलर चलता है डार्क ग्रीन में. से ओके. ओके, ना बैरन लैंड्स का कौन सा कलर देंगे? चमकीला येलो दे देते हैं. Yes. Bright yellow. So this select a brighter version of the yellow. Okay, this yellow चलेगा ना येलो? ओके. ओके, एंड रोड का कलर क्या देंगे? ग्रे कलर दे देते हैं. ग्रे कलर. तो ब्लैक का ये रोड का ग्रे कलर. ओके, ओके किया, ओके किया. सो आई हैव नाउ सिलेक्टेड, I have now done the coloring
of all the land use land cover classes, and what I am now doing is style and save the style. So I'm going to save the style file that I'm going to write. So save style. If I do that, यहाँ पे देखो QGIS QML style file है. So I have to save it as a style file. यहाँ करेंगे and I'm just going to save it in the same place where it is. Okay, okay. Now I am going to save this. So मेरा underscore style ऐसा किया and okay कर देता हूँ. So I have been able to create my style file, save it, and then applied it and okay. Now you see right now यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ legend आ गया, दिख रहा है यहाँ पे आपको legend आ गया. हाँ सर. Okay, so ये agent legend आ गया. तो in case I want to avoid any confusion, एक काम करते हैं, just for the sake of avoiding the confusion, because ID is required, right? And what I'm going to do is, in case I don't want to just, so instead of saying only agriculture, if I'm saying one dot agriculture, okay, and two dot urban area, okay, then water body will be 3, right? Then tree canopy is 4. Just this is just for the legend, okay? Don't worry about the values. So okay, and then roads will be 6. Okay, so I'm just doing 6. Okay, now this is what I have done. Let us apply and okay. और यहाँ पे ये आ गया है. Do you see? Now is the space for working. अभी let us go for digitizing one LULC class. For example, ये जो हमारा water body है, ये देखेंगे. Now you can see here that this particular water body is in multiple parts, है ना? है कि नहीं? Yes sir. तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि देखो अभी मेरे पास ये अंदाजा आ गया है कि ये 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर है. नाउ यू आर एबल टू सी कि ये वाटर बॉडी एक्चुअली बहुत बड़ा है वाटर बॉडी, isn't it? Yes sir. Okay. अच्छा, do you think that this particular, okay, so what we'll do is now we are going to mark this water body for this particular grid. Okay, ये grid है, इसको मुझे मार्क करना है. Now please pay attention very carefully. Now you have to do ना. तो अभी हमको क्या करना है, you can mark like this. Suppose for example, now let us suppose ये जो है, ये पूरा जो ग्रिड है, ये पूरा ही एग्रीकल्चर एरिया, करेक्ट है ना? डू यू सी, डू यू एग्री कि ये पूरा ग्रिड एग्रीकल्चर एरिया है? सो व्हाट यू कैन डू इज, हाँ, सो व्हाट यू कैन डू इज क्लिक ऑन पेंसिल, पेंसिल क्लिक करो, ये पेंसिल क्लिक करो. What you are going to do is now my shift, I'm going to, yes, so the class is now over actually. So what I'm going to do is I'm going to select, I'm just going to click here. What is happening? किधर गया एक्सप्रेशन सिलेक्शन कहाँ है? क्वेरी लेयर किधर है? एक मिनट, just for the sake of, I just turn off the editing for this area right now and select feature का एक मिनट है, just one minute.
View toolbar, selection toolbar is there. Which one? View toolbar, selection toolbar. Where is the toolbar gone? Okay. Yes. So now you can see the selection toolbar. So if I click on this, now please see this. If I click on this, the selection toolbar must be visible on your screen. So it was overlapping the other features. So anyway, select toolbar. Now if I just do that, now see, you can select tuck, tuck. Okay, you can select these toolbars. Okay, suppose I press shift and click here, so it can select the polygons. ऐसा हो रहा है कि नहीं? देखो, if I click shift, what I'm saying is, if I देखो यहाँ पे no select है, if I press shift and click, 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 I can do that, and these are all agriculture. Agriculture की ID क्या है? 1 है. If I do that, let us see what happens. I have selected these, and let me turn the editing on. Okay, I am going to turn my editing on, and you see what happens now. Editing on किया, I have selected these blocks. I am going to do right click and open attribute table. ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं. Open attribute table, and यहाँ पे show all features है. I am going to say show selected features. Click. Do you see this? All the agriculture areas, all the areas which are selected now on this screen, they are the ones which are selected as agriculture. So मुझे क्या करना है, ये राइट यहाँ पे करो क्लिक और यहाँ पे LULC करो, and then you put 1 here, just put 1 here. Okay, if I do 1 here and then update selected, देखो अभी क्या होने वाला है, just I do update selected, click. Okay, and then I just say close, and then I do the no select. Now you see what has happened. These diagrams or these blocks have been marked as agriculture in this particular system. These blocks have been marked as agriculture in this particular system. तो जो पूरे blocks में agriculture, if the entire block is consisting of agriculture, then there is no problem. When is the problem coming? The problem starts happening when this is the case. Here there are in this particular thing, there are multiple blocks containing the same feature, and how do I solve this? That is the question I am asking you. Okay, so let us start with the simplest one. What do we do? Let us now talk about this particular feature. Okay, यहाँ पे 1 2 3 4 part है. Okay, we are going to shadowify this feature by using cut feature. Okay, यहाँ देखो ये cut feature है, यहाँ split feature है, right? So I'm just going to click here, click. अच्छा, मुझे ये वाला पार्ट मार्क करना है. मैंने क्या बोला, पहले बाहर से मार्क करना चालू करो और फिर अंदर आओ और फिर बाहर जाओ और फिर राइट क्लिक करने का है. Okay, so I just do 1 left click, 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 left click. Okay, in some other way, यहाँ पे left click, यहाँ left click, and यहाँ पे right click. So right now, if I disable this clip layer, it has happened is that this particular area has been marked here. You see this? ये मार्क हो गया यहाँ पे. अब मुझे क्या करना है? Right now I have to select this part. यहाँ select करो. I have selected this part and I have to label it as water. Water का ID क्या है? 3. Okay. So what I am going to do? I am going to right click here, see attribute table, and I say show selected features, and here I am going to say LULC is equal to 3 for water body is 3, and then update selected. If I do that, please see, अब मैं deselect कर दूंगा तो देखो ये water body बन गया.
बन गया? Now suppose I have to हाँ do सर, this, but suppose I have to do the same thing for this particular area. Okay, यहाँ देखो क्या है, ये ऐसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे फिर करके इसमें आया ये. Alright, so now suppose I want to do that again, same thing. If I want to split this feature, click and then click बाहर पहले, click अंदर आया, ये अंदर आया, ये यहाँ पे अंदर आया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया और बाहर आके क्लिक किया, राइट क्लिक किया. तो if I disable now, you see what has happened. Okay, that means this particular watermark has been done. So now what is happening? अब मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करो, क्लिक करो and then right click on the attribute table and then I do LULC and water body की ID क्या है, 3 है, right? हाँ सर. तो यहाँ पे शो सिलेक्टेड फीचर करने का वाटर बॉडी की आईडी है 3 एंड देन अपडेट द सिलेक्टेड एंड इफ आई डू दैट यू सी डिसेलेक्ट कर देगा, दिस पार्ट ऑफ वाटर बॉडी हैज बीन मार्क्ड. ओके, प्रोसेस समझ में आया क्या? यस सर, प्रोसेस आ गया है. फिर से रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा सर, बट yes, recorded lecture तो देखना ही पड़ेगा of course, but the thing is that it is good that we have been able to record. Live lecture में शायद उतना recording होता नहीं, but it is good thing that we are able to record and we are able to create our features like this. अब आपको क्या करना है, remember you have to prepare an LULC map of the entire औरंगाबाद फुलंबरी area and हर फीचर का एरिया निकालना है कि वाटर बॉडी का कितना एरिया है टोटल, एग्रीकल्चर कितना एरिया है टोटल, अर्बन कितना एरिया है टोटल, रोड कितना एरिया है टोटल. ओके, ऐसे करते करते पूरा एरिया निकालना है. एंड प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो फीचर दिख रहा है ऑन योर स्क्रीन, यू आर सीइंग दिस फीचर, आर यू एबल टू सी दिस फीचर यार? यस सर. ये जो है रिवर नहीं है, दिस इज नॉट द रिवर, दिस इज द रोड. डोंट कंफ्यूज प्लीज, ये रोड है, ये पता चला इसको रोड मार्क रिवर मार्क कर दिया. अगर ऐसा करोगे तो ये पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता रिवर. ठीक है सर, इसमें रोड कैसे मार्क करेंगे अभी? कैन मार्क ना भाई, यहाँ से यहाँ से कट चालू करो, यहाँ खत्म करो, यहाँ से अच्छा, कट मतलब चालू करो. ये जो ये दिख रहा है अभी, बस उतना ही मार्क करना है ना फिर? हाँ, that is the reason, see I divide it into grids so that this marking is easier. There are other method is that you actually must start with the entire boundary and then start marking, then that you have to start from outside. Okay, what approach we are following is we are going to do whatever is known first and then whatever is unknown. Like for example, this is the urban area, ये total urban area, ये जो पूरा cyan color में दिख रहा है peacock blue, this is total urban area. Yes sir. So I hope you have enjoyed today's system. So before you close QGIS, please make sure that you save your layer edits and please save your layer and save your project. Otherwise सब गड़बड़ हो जाएगा. And make sure that there are no temporary layers in your project. Otherwise you will be suffering a lot. कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा types. सर और एक डाउट था सर, रिलेटेड टू अपना CA1 पे जहाँ अपन ने उसको स्टॉप किया था. Yes. सर आपका जो ये मैप दिख रहा है, जैसा जितना डिटेल में या जितना स्पेसिफिकली अलग अलग दिख रहे हैं कलर्स, मेरा जो है वो उतना ऐसा नहीं दिख रहा है. मतलब थोड़े से मेरे जो रेड एरियाज है वो आपके इससे अलग आ रहे हैं. अच्छा, तो वो गलत है क्या सर फिर? मतलब वही समझना था मुझे कि कहीं मिस्टेक हुआ है क्या उसमें, क्योंकि ये सब रेड एरियाज दिख रहे हैं मेरे इसमें भी, बट एग्जैक्ट सेम का सेम ऐसा नहीं आया है सर.
Just wait a minute. Please tell me whether you are seeing something else. So let me do one more process that we have not done. And please tell me accordingly. Processing में जाता हूँ मैं और pan के 3 बैंड खोल लेता हूँ. Add and what we are going to do, just wait a minute. तो ऐसा भी होगा सर, ऑब्वियसली कलर स्कीम मेरा अलग है तो उसके वजह से भी अलग दिख रहा होगा. नहीं, okay, let us see what is happening with you, because I what we did in the CA1 was with the pan bands. So I did not ask you to do the LULC preparation. Okay, so the pan band, how it look like in. So let me tell you how it looks like. So miscellaneous merge. Okay, so we'll just do input less and click, click, click. And if I do that, I say okay. Output data type is good, no problem. Input pixel value is okay. And this is what I'm going to do. So I'm going to run. Okay, just closing, and we'll remove the pan bands from here right now. Okay, so now you've got the merged layer. Oh my god, what did you do? Sorry. We have committed some bizarre mistake. We did not do this. Okay, so close. So you might have seen this kind of map. हाँ, ऐसा तो आया था सर. ऐसा ना? Okay, now the point is
पहले आया था, फिर इसके बाद अपन आगे के स्टेज में जब क्लिपिंग और वो सब हाँ. Yes, so I'm just going to do that. So Tehsil, and this is the merge, and assign a no data by to 0. And do that on that. Close. So please tell me whether you have got this. Please tell me whether you got this or not. Just a second, sir. ऐसे ही आना चाहिए. तो हम लोगों ने उसको क्या किया था, 3 to 1 किया था फिर. और ऐसा आता है. हाँ, मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर करके बताऊं सर, मैंने एक्सपोर्ट इमेज करके रखा था उसका. ओके. तो शायद ऐसा ही है वो, बस आपके इसमें थोड़ा डार्क दिख रहा है वो. मैं इसीलिए कंफर्म कर रहा हूँ ताकि सर वो आगे अपन अगर मैं उसमें ये इस टाइप का बराबर है. क्या अभी दिख रहा है सर आपको? हाँ. सो ये एक्चुअली ये जो है, दिस इज द पैन शार्पेंड कंपोजिट. करेक्ट है. और फिर जब मैंने कलर उसका चेंज किया था सर, तो जैसा कलर कोडिंग जब इधर किया टेम्परेचर के हिसाब से, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था उसी इसी का बात का. नहीं, ये अलग चीज है. दिस इज द डिफरेंट थिंग एंड दैट इज द डिफरेंट थिंग दैट वाज. ओके, सो दिस इज करेक्ट नो? हाँ, दिस इज द वन व्हिच इज करेक्ट. यस. ओके ओके. So so whatever you are doing, suppose for example, right now you can see कि बाबा ये agriculture है. ये जो दिख रहा है ना on your screen. Oh, sorry. Did I stop sharing here? Okay, so because I am online on 2 different computers right now. So you are seeing this area. Okay, so this area is agriculture. So what you can do is, see, what I'm saying is, see, if you okay, so suppose for example you want to do it on this, I'm okay with it, no problem. So you can also do it on this. Okay. आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, इसमें भी चलता है. Yes. So you can see the agricultural areas clearly. For me, you see, the point is because I'm a remote sensing scientist, for me this color is much more convenient. Say for example, this one is more convenient to me because I'm a remote sensing scientist. Yes, yes. So I mean, I'm just saying, but it might not make sense to you. So this one might make more sense to you. Okay, I mean, it's okay. I mean, whatever it is. And somebody दिखने में अलग दिख रहा था, इसलिए I thought गलत तो नहीं हो गया कुछ. नहीं, गलत कुछ नहीं है. I mean, just you have a different image. That's it. And somebody who has submitted the report ना, किसी ने वहां पे मेरे को आर्किटेक्ट बताया. I am not an architect. Somebody has written architect. Anyway, so I hope you have understood whatever we are doing. Okay, so इसको मैं सेव कर लेता हूँ. ये just because पैन शार्पेंड हो गया ना सेव, इसको मैं एक्सपोर्ट करके सेव कर लेता हूँ. ये ठीक है. Okay, so I've done that. So it is now saved, and you can remove this. So what I'm going to do again, यहाँ पे coloring थोड़ा 3 to 1 होना चाहिए. And there you are. तो अगेन यहाँ पे ये रोड्स हैं, because in the pan sharpened image the roads are much clearly marked. You can see that, हाँ, ये बहुत अच्छे से रोड दिख रहा है.
तो ये नदी नहीं है, प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक। ये अदरवाइज व्हाट विल हैपन, दिस इज द पहाड़ एरिया। द नदी, ये ऐसा लगेगा यहाँ पे रोड जो नदी आया और पहाड़ के ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतर गया, ऐसा होता नहीं है। बी केयरफुल। Okay. Yeah. So, okay, so we will stop our class today from here, and I'll just take the attendance. Okay, thank you, sir.